Good morning, everyone. Good morning to everyone, and welcome to the class. Okay, I hope that you have received the quadratic worksheet and you have started working on it, right? And I felt that you feel it very comfortable to solve it and your doubts will be cleared looking at the worksheet. Yes, and today here we are starting with a new chapter, okay, which is a totally different concept for you altogether, but quite simple for you. And thanks to pandemic, you have reduced with your you don't have the word problems, so your work is bit reduced here. So we begin with some patterns which you have to judge it. And I want everybody to pay attention and if no, don't be very hasty in answering, but I want some other students also to answer when it is asked to you. No unnecessary typing and pay attention to the work. Okay, so let's begin here. You will see I'm writing some numbers here. Okay, you have done these numbers well. Okay. Okay, I hope you are observing the number. Okay, now if you look at this number, yes, good morning all and welcome to the class here. If I look at these numbers, so you could see 1, 2, 3, 4, and if I tell you ahead, actually you could answer it as 5, 6, 7, 8, right? You are familiar with these numbers as natural numbers. But here now, right now, I'm not talking about any kind of particular group of numbers, okay? But we are dealing just with the patterns here, okay? So if I name it like this, some patterns say, I'll just write it down again. Okay, so please observe this carefully. Okay, if I ask you to fill these blanks, do you have the answers with you? Okay, so let's check it that whatever you are thinking about the answers are correct or not. Okay, if you say here, if I ask you two more numbers, as you know, these are natural numbers, so you could write this as 5 and 6. What about here? 2, 4, 6, 8, 10. Next one would be 12, 14, 16. Similarly, can you guess the next answers here? Yes? 3, 6, 9, 12, 15. You know, what is the problem with the strength again? One day, you know that they come and the other day they are out. You know, with 21 students. Shocking. Okay. You personally send me the height here. I'll send you the attendance sheet. Now, the two are the link after finishing. You those who are present right now will send me hi in WhatsApp. I'll send the attendance sheet to them. I just want to check who are there. Yes, I think you got the answers here. After 15, yes, 22, 18, and after 18, what will come? Yes, you all are correct. 21. Fine. Then we go ahead, move on like this with the other one. So we get it as 1, 5, 9. So the next would be, could you guess it? Yes? 1, 5, 9. What would be the next one here? Could you? Anyone? So 1, 5, 9. The next, if I say it is 13. What would be the next one? Yes? 17.
If I go further, it would be 21 and so on. 15. No, dear, something is wrong. A third, check it. Yes, Pulkit, you're right. So this is the sequence. Could you answer for this, everyone? Could you answer for this? Check. Could you tell me? Next three, you observe it and check it and tell me what could be the answer. Yes, right. Yeah, it's correct. 13, 17, 21, correct. And now go ahead with this last three. Observe this and check it. What could be the next answer? No, a third, no. A third, pay attention, Vita. Look at it. 63, 60, 57, 54. Okay, yeah, Celine, you're right. Next is 51. Yes. Next, yes, Pulkit is correct. 51, then 48, then 45. Very true. Very true. Very true. Athar, pay attention to the concept. What are we doing? Think on that. Come on. Could you guess the next one? Could you guess this one? Could you guess this one? Yes? Yeah? Yes. Athar, you're right. 101010. Correct. Could you guess here, everyone? 14916. Yeah, you're right. 10 101, so 10. One more time, Priyanka. Okay, next one. 14916. Something here? Anyone? Yeah, most of you are correct. Priyanka, you are a bit wrong. You put a zero, I think. Same, Ankita. We already have 10101 and here. Okay, and one more. Quick. You can write this. I'll think on one more. Yes. Come on. You got this? 1, 4, 9, 16. Yes, Priyanka, correct. 25. What is the next? Yeah, could you guess anyone? Yes, correct. 36 and 49 and so on. And let's discuss the last one. Anyone could answer this? Yes, correct. Yeah. And this last one? No, it's wrong. Okay. Now, I will just answer you this later. No, it's wrong. Let's pay attention here now. Everyone here, stop typing. I don't want any answers right now. And now look here. By the time I think everybody, some of you have joined also. Now look here. When I talk about the first pattern, now we generalize it. So those who have typed it, it's okay. Now pay attention here to the concept, which is more important. You were just making fun and you will understand what was the fun and what was the reality. Till now I will give this correct answer. Okay, look at it. When I took this first pattern, okay, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. You could guess this because you could see. I think I'm giving you the answer. I think what you thought. You saw the difference was one, right? The difference between each is one. So what you did when I asked you the next term, you added one to it. Fine, everyone. Do you agree with me? You did plus one to it, and you answered me. When I started with the next one, 2, 4, 6, 8, 10. So you could see the differences to constant. And so straight away you added 2 here and you answered me here also with plus 2.
right? Then I told you for the next one, similarly observe the difference was plus 3. And so you told me the next one, right? Please stop typing now. Now, when I said the fourth one, similarly 1 plus 4 is 5, 5 plus 4 is 9. With the same logic, 9 plus 4 is 13. 13 plus 4 is 17. 17 plus 4 is 21. That is, we add plus 4 each time. Do you agree with this? Okay. And with this logic, if I go here 63, 60, now this was bit reverse. Here the numbers were increasing, but here the numbers are decreasing. So bit confusing for you when you started thinking. But then if you observe 63 minus 60, the difference is 3. 60 minus 57, the difference is minus 3. So 57 minus 4, difference is minus 3. With this same logic, I do minus 3 from each one and I get my answers. Okay. And now if you observe here, with this logic, do you get some constant difference here? Your answer is no, isn't it? Because you will see it is just a pattern which I made it from the numbers 1 and 0. Fine. Similarly, if you look here, you know that they are not related to each other, though they are related to each other. Actually, it is a pattern of square of numbers I'm listing it out. But if I tell you some common relationship between two numbers, you will not find out any relationship. Am I right? Okay. And looking at the last one, where I haven't got the single correct answer, okay, 1, I made it the same digit 11 here, like 1, 1. Then I added these 2 to get this. Here 1, 1 is the only digit, so I take it that there is nothing here, so sum is 1. This one I added here. This here, the next 2 I added, I wrote here. Next 2 I did here. So with this logic, I get the next as 8. But again, it was just to confuse you and to make you understand that there could be different patterns. But what could you find something similar in this? That if we talk about my first few examples, it was very clear for you to understand. Okay, so now not to worry, I think most of you understood this pattern, right? So you're on the right track. We are going to discuss something about it. This is just for the fun and to understand there will be many patterns, right? And this pattern specifically where, what did you observe something in this pattern? I hope you get this what I'm saying. What did you observe in these patterns? तो मैंने अभी जो highlight किया. What you could see about these numbers? You could see that something was common. What was that common thing? If I add 1 to it, I was getting the next number. I was adding 2 here to each number, I was getting the proper number. Yes, see the patterns are also called as sequence also. You're right. But this sequence, even this is the sequence, even this is the sequence, even this is the sequence. But what is the difference between these kind of sequence? That here you could see the difference between the two terms comes same, isn't it? Whereas it was negative, but still there was some difference of yes, the difference was common here. And this is what we are going to learn. This special type of pattern or this special type of sequence, we call them as in arithmetic progression. That is a shorter form is called AP. Okay, AP stands for arithmetic progression. Progression is nothing but sequence, progressive. You know the word progress? So progression is a noun form of it. Okay, so here in arithmetic progression, when we say arithmetic, you have to remember that the difference will be constant. Got it? This is the definition of arithmetic progression. That a number pattern or a sequence of number are in arithmetic progression if the difference is constant. What difference? Again, if I have to reframe this, the sequence or the pattern or the progression is in arithmetic progression
if the difference between any two consecutive term is constant. Hope you got it now. You are familiar with consecutive. अब कोई भी दो term का difference देख लो. Okay. You get the same number, and that number is nothing but the common difference. So if you get the common difference, you will say yes, the numbers are in arithmetic progression. I hope it is clear to you. So today here we are moving on to a new chapter, that is arithmetic progression. Okay, and take one more example here, and we define few terms which we are going to discuss here. Okay, say suppose I'm starting with 3 and then 7. Then what should be my next term? If 3 is the first term, second is 7, what should be my next term to make the perfect progression? You saw that I took the difference 4. So here also I should have the difference 4. With this logic, this is the pattern. Okay, so always the first term is denoted with small a, right? Please just now just a theoretical part for the formula part will come. So first term is a. Okay, this common difference we denoted with the letter B. Okay, the common difference is denoted with letter B. I hope this much is clear to you. Then, if I say P1, P2, P3, P4, okay, are different terms of AP. Okay, it could be with a small letter, it could be with a capital letter. Whatever you write, if I say with a capital letter, P1, P2, P3, P4 terms. Okay, so my P1 is equal to my first term, A. Fine. Okay, what is T2 will be equal to? If I compare, I don't know what is T2. This is my first term, and this is A also. This is the second term. This is the third term, then the fourth term, and so on. So could you say what will be T2 here in terms of A? If I have to write T2, if I have to find it out, what do you write? 3 plus, you could see the difference is 4. So 3 plus 4 is 7, isn't it? I know that you listen to me, but I hope that you are here also with me. So, and my question to you was, if this is the first term T1, okay, so what would be the second term? Yes, someone, thank you for your reply. The second term gives us A plus B. Yes. Okay, but 12, Pulkit, why 12 you are writing here? Okay, with the same logic, if this is there, I don't know here. I'll just reframe the question because I think some of you are with me or not. I'm not able to understand it. Okay, I'm saying the first term, say 3, and the difference B is, say, 7. Come on, let's frame AP now. Will form the AP. So my first term is 3 and difference is 7. Could you tell me the second term? Okay, let's change the question now. Could you tell me my second term? Yes, I'm waiting for your replies. If this is my first term and difference is D, could you tell me what will be the second term? Okay. If this is 10, could you tell me the next term? I hope you could hear me. 10, great. What could you tell me the next term? Are you all here present? I would just really like to see whether it is a net issue or you are not able to understand my question. There are so many there. Yes, Danish is here. Danish, are you, your earphones are aside? Why nobody is able to answer me? Except Pulkit and one or two are answering. Others, the rest of the students, please do reply. Okay. I hope that you're listening to me. The first number is 3, so second number is 10.
Okay, the next number will be again you add one more 7 to it, so it becomes 17. Okay, one more 7 to it, so it becomes 24. So what happens that you go on adding the difference every time. Okay, so if I take this as A, I can take this as A plus B plus 7, that is A plus B. Yes, my third term will be one more time 7. That is A plus E plus D. Could you see this? थोड़ा सा ध्यान दोगे प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू उसी लॉजिक के साथ इफ आई गो ऑन मूविंग one more time D, so that means I go on adding D here. Okay, so kindly pay attention and so see what I'm saying. If they, with this logic we go ahead and we move on to different terms, because I could see I'm not getting any response. If we talk about different terms here, तो आपको क्या है वो A है, आपकी सेकेंड टर्म है उसमें आपने कितनी बार A ऐड किया है, वन टाइम. A में आपने क्या ऐड किया, B ऐड किया. जब मैंने आपको पूछा कि आपकी थर्ड टर्म क्या है तो आपने क्या किया, यू added 2 times D to it, isn't it? 17 को how can I write it as 17 can be written as 3 plus 7 plus 7. इसका मतलब ये हुआ A plus D plus D. So it is A plus 2 times D. So please be with me. Okay. If I say first term A is 3, second term is A plus D, यानी 3 plus 7 is equal to 10. Third term is equal to A plus B. 10 में हमने एक और बार 7 ऐड करेंगे. So 3 plus 7 plus 7, that is 17. Now look at it please. That is 3 plus 1 times 7. Second term में second term में 1 times 7. Third term में 3 plus 2 times 7, isn't it? Fourth term में I'll definitely 17 plus 20, this is 24. तो 24 को मैं 3 के साथ relate कर रहा हूँ. तो 3 plus how many times 7 I'm getting it here? Yes, 3 plus how many times 7 I'm getting it? 3 times 7. Okay, so may I say A plus 3 times 3. And with this logic, please pay attention and see. First term है तो direct नहीं है. Second term है, term जब second है तो आप 1 time 7 कर रहे हो ऐड. टर्म जब थर्ड है तो आप 2 times 7 यानी कि आपका डिफरेंस ऐड कर रहे हो. जब आपकी टर्म फोर्थ है तो आप 3 times डिफरेंस जो है वो ऐड कर रहे हो. तो इन जनरल या तो आप pn से लिखिए या तो आप an से लिखिए. सपोज nth टर्म, I'll go with our NCERT जो फॉलो हो रहा है, an यानी कि nth टर्म है तो a प्लस मैं कितनी बार यहाँ पे d करूंगी. अगेन आई एम सेइंग जितनी पहली टर्म तो ऐसी होती है, सेकेंड टर्म में एक बार, थर्ड टर्म में 2 बार. ओके, 2 बार डी होगा. थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में कितनी बार है, 3 बार होगा. 1 2 3 4. फिफ्थ टर्म में कितनी बार आप ऐड करोगे, 4 टाइम्स. सिक्स टर्म में 5 टाइम्स. तो इसका मतलब हुआ जो टर्म है उसे एक कम बार आप डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, राइट. एंड विद दैट लॉजिक सपोज ये nth टर्म है तो उसको nth टर्म आपको कैसे मिलेगी, इन जनरल a plus n minus 1 time d. I would just clear it with one more example. Maybe some confusion, I don't know because I'm not getting any response, so I'm a bit nervous. Okay, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अभी जैसे मैंने जो सिंपल एग्जाम्पल किए जैसे 2 4 6 8, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो कि मैम इसके बाद 10 आएगा, ओके इसके बाद 12 आएगा. फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स. तो इस सीक्वेंस में आप मुझे आंसर दोगे. ओके, इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी,
फिर इट इज ए, यहाँ पे डिफरेंस भी मेरा 2 ही आ रहा है, ठीक है। सो ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस वन मोर टाइम बी, वन मोर टाइम बी, वन मोर टाइम बी, वन मोर टाइम बी। सो ये मेरी सिक्स टर्म है। इफ आई आस्क यू ओके व्हाट इज द 20th टर्म, नाउ इट्स अ क्वेश्चन, ओके टेल मी व्हिच इज द 100th टर्म। तो आप कह सकते दैट मींस वी नीड अ फॉर्मूला टू जनरलाइज इट, और वो फॉर्मूला हम बना रहे हैं कि मैं आपको कोई भी टर्म कहूं तो आप इसको आंसर कर सकते हो लॉजिक के साथ, बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंस इज सेम। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेकेंड टर्म में एक बार, थर्ड टर्म में दो बार, फोर्थ टर्म में तीन बार, फिफ्थ टर्म में फोर टाइम्स, सिक्स टर्म में फाइव टाइम्स। तो सेवेंथ टर्म हुई तो आप कितनी बार करोगे, सिक्स। और उस लॉजिक के साथ nth टर्म हुई तो आप कितनी बार करोगे, एक कम उससे। एंड दैट्स व्हाई वी मेक अप द फॉर्मूला दैट an यानी कि nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, जितनी टर्म्स है उससे एक कम, इनटू d। ओके यस प्रथमेश, आई थिंक आस्कर, यस यू आर राइट। तो मैंने जैसे कहा कि 100 टर्म, तो 100 टर्म क्या होगी, एक कम। ओके सपोज मैं कहूँ 29th टर्म, तो 29th टर्म क्या होगी, ए 29 होगी, ए प्लस यहाँ एक कम, 28। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको शायद लगेगा भी कि ये बहुत सिंपल है, बट माई एक्सपीरियंस सेज यू नो पीपल अंडरस्टैंड दिस, बट इसके साथ कोरिलेट करना भूल जाते हैं। आई होप मैनी ऑल ऑफ यू, मैंने लिटरली पर्सनली कॉल करके स्टूडेंट्स को बुलाया, स्टिल आई कांट सी देम प्रेजेंट, but I hope those who are present and those who watch this later also you understand this concept. Okay, तो ये relationship आपको हमेशा याद रखनी। If I say 29th term is say suppose 100, 29th term is 100. Okay, it means A29 is 100, कोई भी एक नंबर किया, not talking about this pattern। इसका मतलब क्या हुआ, A plus 28 B is 100। ये लॉजिक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। Is that clear to you? I hope this is very, very clear. If I said 50th term is 75, so A50 is 75, and that means A plus what is it? 49B is equal to 75। बस ये रिलेशन आपके दिमाग में जैसे ही टर्म कहती हूँ तो आपको A और D में भी ये आना चाहिए। I hope this is clear to you. So this is the basic of this concept. Let's quickly go for the recap because this is the most important formula which you'll be using it. ये बेसिक याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा, और ये रिलेशनशिप याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। So that is the only thing left in this chapter now. बाकी जो formula है वो base इसका है, because many of the children they remember the formula but they can't apply। जो मैं ये अभी बता रही हूँ ना, ये समझ में आता है बट यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो यहाँ नहीं पहुंचेगी गाड़ी, तो we can't be able to solve the sums जो 3 marks के हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके सो मैंने जो दो चीजें बताई हैं, how AP is defined, AP की definition क्या है, कि a sequence in which the difference is constant। तो यदि आपको कोई सिंपल पूछ रहा है कि ये AP है तो क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले तो आप इसके देख लीजिए कि चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन विद AP। ओके AP आपको दी हुई है, मतलब आपके पास A भी है और B भी है, फाइन। ओके और देन AP दो टाइप की हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, राइट, क्योंकि आप ऐसे ही नंबर पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हैं। दे कुड आस्क यू A और D जब दिया है तो दे विल आस्क यू कि ओके ये 100 टर्म फाइंड करिए, या 50th टर्म फाइंड करिए, या 28th टर्म फाइंड करिए, या 10th टर्म फाइंड करिए। तो ये क्वेश्चन आया तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम d। क्योंकि जब वो आपको पूछ रहा है कि मैं ऐसे कहूंगी कि 10th टर्म फाइंड करिए, तो 10th टर्म का मतलब हुआ n is term, n is 10, a is not 10। क्लियर? ओके जब मैं ये लिख रही हूँ 10th टर्म is 16, तो इसका मतलब हुआ a10 is 16। ओके n 16 नहीं है, n क्या है 10th,
जो अपना रोमन पता है ना, आपने कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर किए हैं ना, ओके, तो ये ऑर्डर दिखा रहा है, तो ये ऑर्डर मतलब कि सीक्वेंस 10th 5th 6th, तो वो आपको n की वैल्यू दिखाता है। तो एक तो है, या तो आपको कभी n फाइंड करने को हो सकता है, जैसे 1 2, ओके, ये टर्म इटसेल्फ, यहाँ पे देखिए nth टर्म 1, a फर्स्ट टर्म, n थर्ड टर्म, एंड d फोर्थ टर्म। तो नेचुरली इस फॉर्मूला में आपके पास 4 टर्म है, तो ऑब्वियसली यू कुड गिवन द पहली 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ। या तो आपको बोलेंगे कि अच्छा nth टर्म आपकी, ऐसे कहेंगे nth टर्म आपकी 16 है, अब n क्या है, वो भी आप इसी फॉर्मूला से कर सकते हो, isn't it? तो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, आपके पास d होगा, आपके पास nth टर्म होगी, आप n फाइंड कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस टाइप की क्वेश्चन है कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है एपी, और आपको इस 4 में से कोई भी एक फाइंड करना है, फाइन। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया। दूसरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि शो दैट इट इज एपी, मतलब आपको पूछेंगे कि इज इट एन एपी, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इज इट एन एपी, तो एपी है कि नहीं है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो पहली 2-3 टर्म का बताइए डी क्या हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे जब ये होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कम बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, बट यू शुड नो दिस एज अ कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये 3 लिया, ये 7 लिया, और ये 10 लिया, ओके। अब ये क्लियर, इज इट एन एपी, तो आप क्या कहोगे, 7 माइनस 3 4, 10 minus 7 3, is the difference constant here? No, the difference or the d is not same। तो क्या ये एपी हो सकती है यहाँ पे, नहीं हो सकती, and therefore you write it is not an एपी। समझ में आ रहा है, ये आपके बेसिक बेसिक डेफिनेशन के क्वेश्चन है। एपी है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखना है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट। आपका डी क्या है बेसिक, क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि डी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें डी हमें दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दिस इज 4, दिस इज 9 14 19, इज इट एन एपी, इज इट एन एपी, ऐसे पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले डी फाइंड किया, तो यहाँ पे डी क्या है, 9 माइनस 4 5, यहाँ पे डी क्या है, say d1 लिखती हूँ, d2 because I don't know whether they are same or not, 14 minus 9 5, so yes यहाँ पे है, therefore d is same and therefore it is an AP। ओके, तो आपका d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा a2 माइनस a1, याद रखिएगा प्लीज, डिफरेंस हमेशा आपको डी जब फाइंड करना होगा, जब आपको एपी दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, ओके, तो आपको डी फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, हमेशा ए2 माइनस ए1, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, नो, प्लीज याद रखिए, ओके, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव नंबर्स आप लोग हमेशा फर्स्ट माइनस सेकंड करते हो, सो डोंट डू दैट प्लीज। ये बहुत बेसिक्स है, इट्स अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा करके ले लूं, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये सीक्वेंस में ऐसे दे दूं 19 17 से 15 एंड समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे डी आप 19 माइनस 17 नहीं लिखोगे, ओके, here d is equal to 17 minus 19, that is minus 2, so your d could be positive, your d could be negative। जब असेंडिंग ऑर्डर है आपका, स्मॉल से बिग पे जा रहा है, तो आपका d डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट यदि डिसेंडिंग नंबर है, ओके, डिसेंडिंग पता है ना आपने, बिगर टू स्मॉलर, शुरू बड़े नंबर से हो रहा है, आपका a बड़ा है और फिर नेक्स्ट टर्म से छोटी होती जा रही, तो उस केस में आपका d नेगेटिव होगा। And be careful about minus sign, don't take it for granted। I hope this is clear to all of you, perfectly समझ में आ रहा है, ये बहुत ही important concept है, प्लीज इसको याद रखिएगा। It is not first minus second, D is second minus first, okay, D is third minus second, D is fourth minus, okay, so please इसको याद रखिएगा। So we'll be doing the sums on this question based on this formula। I was telling you वन थिंग कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमेशा आपकी प्रॉब्लम ये होती है
कि क्या आता है. So quickly I'll tell you what kind of questions will come in this chapter. तो पहले तो जो मैंने सिंपल बताया, इसमें से चार में से तीन दिए हुए हैं. You have to find out the one, any one. मे बी n फाइंड करना, मे बी d फाइंड करना है, और ये करना है. सिंपल क्वेश्चन है. दूसरा है उसका कि they will be given you the terms. जैसे 15th टर्म की वैल्यू दी है और वो आपको पूछेंगे AP बताइए. ओके, तो इन दिस केस दिस इज एप्लीकेशन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल. जब मैं ये लिख रही हूँ, आपने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, a plus 3b is equal to 15. What is it? दो वेरिएबल है, so it is nothing but linear equation with two variables. तो ऐसे सपोज मैंने दिया है कि थर्ड, ये आपकी कौन सी टर्म है, a plus 3d कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म. ओके, आई होप यू रिमेम्बर इट इज फोर्थ टर्म. तो फोर्थ टर्म आपकी ये है, और 15th टर्म से a plus 14b से I'm just writing it. Suppose this is 28. Okay, find AP. तो इसमें आप AP कैसे फाइंड करोगे? ये आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड सबको पता है, राइट? You can find out the value of A, you can find out the value of B, and you can find out the AP. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है. देन इट गोज विद बिट हायर लेवल क्वेश्चन, जैसे कोई नेगेटिव AP चल रही है, माइनस नंबर्स में AP है. ओके, या तो असेंडिंग हो सकती है या तो डिसेंडिंग हो सकती है. उसमें वो पूछेंगे क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट टर्म जीरो, या तो विच इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म. वैसे ही रिवर्स में जैसे नेगेटिव AP जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं AP ले रही हूँ 9 देन 3, ओके 6 का डिफरेंस, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 minus 9, अब जो मैं बता रही हूँ -6, तो यहाँ पे मेरी थर्ड टर्म क्या होगी, नीचे होगी. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि which term will be negative. ओके, तो आपको वो टाइप के क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. उसके बाद थोड़े से हाई लेवल में क्वेश्चंस आते हैं. मल्टीपल्स में दिया है, आपको पूछेंगे कि कितनी टर्म है. मैंने भी जैसे बताया कि AP इनफाइनाइट भी हो सकती है. ओके, कि भाई बहुत सारी टर्म्स जाती रहो, इनफाइनाइट भी हो सकती है. इट कुड बी फाइनाइट आल्सो, लिमिटेड. मैं कहूंगी कि मैं 50 टर्म्स की AP ले रही हूँ, तो इस फाइनाइट लिमिटेड नंबर्स है, तो वो आपको पूछेंगे अच्छा ये नंबर और ये नंबर के बीच में कैसे AP बनाओगे. जैसे सिंपल है, मल्टीपल्स ऑफ 4 की AP लेंगे लेस देन 100 है. ओके, तो कितने टर्म्स होंगे. तो एक्चुअली ये ओरल आंसर है. क्या कहा मैंने, सुना आपने, मल्टीपल्स ऑफ 4 लेने हैं आपको. ओके, यानी कि 4 के डिफरेंस की AP. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन डिफरेंस एंड द डिवाइजर. इफ आई से मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 का टेबल आता है ना सबको, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. तो डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस 4. तो जब मैंने मल्टीपल्स ऑफ 4 कहा, तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस आपका D जो है वो 4 ले लेना है. सिंपल, फाइन. तो मैं कहूंगी फर्स्ट 100 के लेस देन, तो कहां तक चलेगा, 25 4 100, लेस देन 100. लेस देन 100 मतलब आपको 100 नहीं लेना है. 100 नहीं लेना है तो उसके प्रीवियस वाला 96. ओके, सो 4 8 12 dash 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 till 96. तो अब आपको इसमें पूछ भी सकते हैं फाइंड इन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. तो देखिए ओरल आंसर है, हमें आते हैं टेबल का 24 4 96, तो 24 4 मतलब 24th टर्म 96 है, बट यू हैव टू शो द फॉर्मूला आल्सो. ठीक है, तो इस टाइप के फर्दर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. आई होप कि आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ में आया है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है. यू विल एंजॉय इट एंड यू विल स्कोर इट. हाँ, बस ये 5-6 टाइप के सम्स है जैसे मैंने बताया, डिविजिबिलिटी वाले हैं, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है. और उसके बाद जाता है, जस्ट बता दे कि विच टू किया तो जस्ट इट्स एंडिंग अप. एंड देन बाद में आता है सम ऑफ द नंबर्स, जो मैं टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. सो विल डू इट व्हेन वी स्टार्ट विद इट. और उसके बेस पे सम है. एंड यू आर लकी इनफ दैट यू डोंट हैव द वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे टिल नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव. तो आपका बहुत सारा टाइम कम हो जाएगा एंड दिस चैप्टर विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग फॉर यू. फाइन. तो सिर्फ बेसिक रिवाइज करना है एंड फर्स्ट कंप्लीट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप चैप्टर 5 पे जाओगे. सो नेक्स्ट टाइम सी ऑन मंडे. ठीक है, वी मूव अहेड विद दिस. बाय द टाइम यू रिवाइज योर क्वाड्रेटिक, बिकॉज़ आई एम प्लानिंग फॉर अ टेस्ट, ओके, इन द वीकेंड. सो डू प्रिपेयर एंड हैव अ नाइस डे. एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू. टाइपिंग सेंड कर रही हूँ, सो गो टू इट.